मणिखम्मा, आप सबका अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे दिवस में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस हरे भरे एनआरसी के प्रांगण में जो है आप पूरे जोश के साथ, पूरी खुशियों के साथ, पूरी चहचहाट के साथ इस विशेष अवसर का आनंद लेंगे, मंच से सीधे जुड़ेंगे। मेरा निवेदन है आपसे, अभी तक के जो कलाकारों की प्रस्तुति थी आपने शानदार उनका उत्साहवर्धन किया, आगे भी मेरी उम्मीद है कि आप ये कंटिन्यू करेंगे। कि सर हमारे बीच में उपस्थित हैं जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं, माननीय सम्मान के योग्य वी मुरलीधरन जी, जो भारत सरकार में वर्तमान में केंद्रीय संसदीय मामलों एवं विदेशी मामलों के मंत्री हैं, जो बहुत ही ऊर्जावान, शानदार और गतिशील व्यक्तित्व के धनी हैं, जो अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। श्रीमान जी हमारे छोटे से निवेदन पर अपना बेशकीमती समय निकालकर, अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं। हम सबको बहुत ही गौरवान्वित फील हो रहा है। इसके लिए हम सब एनआरसी के लोग सर का हृदय से आभारी हैं। इनके सम्मान में मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के बनाए हैं, कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के बनाए हैं, ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं, उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं, आज हमारे बीच में आए हैं। मेरा निवेदन रहेगा ऑडियंस से कि एक बार सब लोग खड़े होकर के हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अतिथि महोदय को सम्मान के साथ स्वागत कीजिए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, चहचहाट के साथ, खुशियों की एक बहार के साथ। थैंक यू सर। मेरा निवेदन है हमारी आरडब्ल्यूए की एग्जीक्यूटिव मेंबर श्रीमती गार्गी कृष्णन से कि वो फूलों के गुलदस्तों से सर का स्वागत करें। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है हमारी एडीजी नर्सिंग डॉक्टर रति बालाचंद्रन। उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। हमारे अतिथि आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर। हमारे भगवान को हम हृदय से तिलक करते हैं, हम हृदय से तिलक करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारी आरडब्ल्यू की एग्जीक्यूटिव राजबाला जाट जी से कि वो आए और मैडम का गुलदस्ते के साथ स्वागत करें। अतिथि के अपने अगले चरण में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठती है जो हमारी एमसीडी के काउंसलर हैं और चेयरमैन भी हैं, हमारे क्षेत्र के काउंसलर हैं और एमसीडी के चेयरमैन हैं। वो नाम है श्री राजपाल सिंह जी। हमारे एक छोटे से निवेदन पर उन्होंने समय निकाला, अपना बहुमूल्य समय दिया, हम उनके आभारी हैं। उनके लिए मैं निवेदन करूंगा आरडब्ल्यू की एग्जीक्यूटिव सुश्री पुष्पा जी से कि वो सर का गुलदस्ते के साथ स्वागत करें। Darkness cannot be wiped out of blackness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression, and divisions in the society. Now, we are going to witness our traditional lamp lighting ceremony to warm blessing upon to achieve prosperity and wisdom. Now, I would like to invite all our dignitaries to the stage for lamp lighting ceremony. Sir, ma'am, please. Dear audience, we can give them an standing ovation.
here on the dais and off the dais. This is a wonderful occasion in the presence of our Honourable Chief Guest Shri.V.Muraleedharan ji, Union Minister of State for Parliamentary Affairs and External Affairs, and our guest of honors, Sri Dr. Know that we celebrate the 12th May of every year as the birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. This year the theme is a nurse owes to lead, investment in nursing, and respect rights to secure global health. This theme is to build to high quality health system to promote nurses in view of the workforces, to care for them with COVID throughout the pandemic was remarkable. We all know that our maximum effort, strength, and many of our nurses go through the situations like extra workload, underpayment, staff shortage issues, and even sacrifice their lives. Considering this issue, it's the time for the country to transform our health system and investment in nursing to secure global health. Everyone knows that within a very short span of time, our RW achieved so many things as our new security system totally revamped and introduction of the security app MyGate in our complex, and we have initiated and works on the progresses of our boundary wall fencing, and our road carpeting work is start very soon. And everyone know that from the last 2 years our lifts are not working, but this is a good news for everyone. Opening of the new lift in every block, expert 103 almost completed, and operation and maintenance of the technically allotted quarters are already started, and upgradation of the fully upgradation, first time in NRC the fully upgradation is happened and its church is going to update it, and introduction of smart notice board in every blocks, and our future plans are upgradation of all the quarters and changing of all the GI, CI pipes, and introduction of Kendra Bandaria or Safal, and upgradation of a badminton court or volleyball court in our complex. Everyone knows that we have some water crisis, so we will add more water connection from the gel board. We can together bring a lot of changes in our society and complex with full support of the cooperation from each and every one of you. As a same team, our tagline says that only a dream team can do a dream work. So let us join our hands and work for the development and welfare of our society. I would like to convey my sincere gratitude to all of you for your support, and I expect to the same down the line. Thank you so much. Thank you, Mr. Arun. On behalf of our AWS, we will now present mementos to our evening guest. Beginning with Mr. Arun G.S., President of AWS, to present the memento to our Honourable Union Minister, State for External Affairs and Parliamentary Affairs, Shri.V.Muraleedharan. Please accept this as a token of gratitude. आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिन के संदर्भ में जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एडीजी नर्सिंग डॉक्टर रति बालचंद्रन जी, अपने इस एरिया के जो काउंसलर है और एमसीडी चेयरमैन है श्री राजपाल सिंह जी, आपके इस एसोसिएशन का अध्यक्ष अरुण जीएस, सेक्रेटरी वैशाख, वाइस प्रेसिडेंट वैशाख, सेक्रेटरी श्याम, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और इस कार्यक्रम में आए हुए, मैं समझता हूं कि भारत सरकार के से जुड़े हुए जो 4 अस्पताल है दिल्ली में, उस 4 अस्पतालों के नर्सेस और उनके परिवारजनों, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन और बधाई देना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय
नर्सेस दिन के उपलक्ष्य में आपको बहुत सारे शुभकामना देना चाहूँगा। मैं और एक विषय पर आपको अभिनंदन भी करना चाहूँगा। पिछले लगभग 2.5 साल से पूरी दुनिया जिस तरह की महामारी से गुजर रहे है और उसमें सबसे कठिन काम, महत्वपूर्ण काम जिन लोगों ने किया, ऐसे नर्सेस जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसके अंग होने के कारण आप सबको मैं विशेष आभार, विशेष अभिनंदन, विशेष धन्यवाद ये देना चाहूँगा। मित्रों, किसी भी महामारी, उस महामारी को रोकने के विषय में नर्सेस के बिना ये संभव नहीं हो पाता है। आप एक डॉक्टर और जो पेशेंट है उनके बीच में उन दोनों की मदद के लिए मदद करके आप जो प्रयास किए हैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, इसके बारे में मैं पूरी तरह अवगत हूं और पूरे देश, पूरी दुनिया आपकी प्रयास, उस प्रयास पर आपको विशेष अभिनंदन देने के लिए मैं इस अवसर का उपयोग करता हूं। मुझे पता है कि लगभग इसमें 50% तक केरल से आए हुए मेरे भाई बहनें हैं, इसलिए मैं कुछ शब्द मलयालम में भी बताना चाहूँगा। അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് നിങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത സേവനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാനും സാധിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ. നഴ്സുമാരടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണവും അർപ്പണ മനോഭാവവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മഹാമാരി കാലത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച തന്നെ എത്ര പുറകോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ആ നിലയിൽ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ. ടുഡേ we have reached an enviable position of having 190 crore vaccines executed, and I am sure that this vaccination would not have been possible without the assistance and dedicated involvement of the nursing community. You work as a bridge between the doctor and the patient, a bridge of love, a bridge of affection, a bridge of care. That is how I would like to see the nursing community. The government of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji has been able to take the lead and has been successful in containing the pandemic due to the wholehearted support, wholehearted involvement that each one of you has provided. I know the initial days of the pandemic, when nobody knew how this pandemic is going to turn out to be. I know of doctors and nurses who worked the whole day in the hospital wards, going back to their families, coming back again the next day morning to fulfill the duty of taking care of the patients, thousands and thousands of patients. And you took your life to risk. And in spite of that risk, I must appreciate, I bow down my head to each one of you for taking that risk and making the country proud that at the international arena, we are a nation
who have been able to contain the pandemic. We are a nation who didn't allow the situation to go out of control, and we are a nation who have been able to come to the assistance of even other countries in the world. The Prime Minister Narendra Modi ji, in 2014 when he took charge as the Prime Minister, one of the first efforts that he undertook was bringing back our sisters from the war-torn Iraq, where they had gone and then they couldn't come back. They were held hostage. But the Prime Minister took it as his prime responsibility to bring back hundreds of nurses from the war-torn Iraq. And since then, now the country, every countryman, every Indian feels when he goes abroad that our life is secure in the hands of the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Be it Afghanistan, be it Ukraine, be it any part of the world during the pandemic. Hundreds and hundreds, lakhs and lakhs of Indians, they were brought back by the government of India under the Prime Minister Narendra Modi ji. And it all started, the first such evacuation was in Iraq, when our sisters who are nurses, they were brought back. The government has been giving special attention to the various problems and issues faced by the nurses. The 2/3 of the workforce in the health sector is nurses. There are around 33 lakh nursing personnel registered in the country, which gives the nurse to population ratio as 1.96 nurses per 1,000 population. India produces 2.87 lakhs nursing personnel annually. And I am sure and I am proud to be part of the ministry led by Shri Narendra Modi ji, that the government has given utmost importance for aiming and making efforts in the universal health coverage and increasing health financing. With growing patient expectations and needs, the role of a nurse is also evolving. Nurses have a highly demanding job. The government has initiated several measures to increase nursing manpower in the country. The requirement of land to construct buildings for the nursing schools and colleges and hostels have been relaxed. The requirement of a 100-bedded parent hospital has been relaxed for hilly and tribal areas. The student-teacher ratio for MSc nursing program has been relaxed. The student-patient ratio for nursing institutions have been relaxed. The maximum number of 100 seats for nursing college will be given to those having parent hospitals with 300 beds without insisting on medical college. Distance from school to hospital has been relaxed from 15 kilometers to 30 kilometers. However, for hilly and tribal areas, the maximum distance is 50 kilometers. The eligibility criteria for admission for diploma and degree have been relaxed. The relaxation for opening MSc program, super specialty hospitals can start MSc without having an undergraduate program. All these have been a few of the steps that the government has taken. Under the Pradhan Mantri Garib Kalyan package, insurance scheme for health workers fighting COVID-19, it provides a life insurance cover of rupees 50 lakhs to healthcare providers, including community health workers who may have to be in direct contact and care of COVID-19 pandemic patients. During the COVID-19 pandemic, government proposed that the individuals providing services in COVID management would be given priority in government recruitments after they complete a minimum of 100 days of COVID duty.
Friends, under the central sector scheme of development of nursing services, the government of India has been upgrading nursing schools to train nurses to match the healthcare needs of the country. It's a continuous process, and the government has shown its will to further strengthen the profession and empower nursing professionals. A draft Nursing and Midwifery Commission Bill is under the consideration of the government, and I understand that the inter-ministerial consultations are on. As per the draft proposal, it aims to provide for regulation and maintenance of standards of education and services by nursing and midwifery professionals. मित्रों, मैं कोई लंबा भाषण नहीं करना चाहूँगा, और भी महानुभाव यहाँ आपसे बात करने के लिए मंच पर उपस्थित है, और आप लोग आज का दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ तैयार हो रहा है, तो इसलिए मैं केवल उन नर्सेस को याद करते हुए मैं मेरी वाणी का विराम करता हूं, जो नर्सिंग ड्यूटी के बीच में उनका जान खो दिया है। निपा वायरस के साथ जो लड़ाई था, उसमें केरल में जो सिस्टर जिनका जान चला गया, लिनी से लेके लिंसी पीटर जिनको एस्टर गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड मिला, ऐसे कई नाम होंगे। मैं उन सबको याद करता हूं, और इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिन के इस उपलक्ष्य में, उसकी पूर्व संध्या में मैं आप सबको फिर एक बार बहुत सारे शुभकामना देता हूं और धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। आज सच में आप सब लोग इस पगड़ी के अधिकारी हो, आज इस स्वाभिमानता के अधिकारी हो। आपने इस देश के हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को नया जीवन देने का काम किया है। मुरलीधरन साहब, मैं तो अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली समझता हुआ, मैं जिस हॉस्पिटल में भी जाता था, उसी हॉस्पिटल के एक कोने से आवाज आती थी, ये तो मेरा भाई है राजपाल, कि मैं एक छोटा सा काउंसलर इस निगम में, आज मैं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन हूं। मैं चेयरमैन नहीं हूं, मेरे क्षेत्र का हर निवासी चेयरमैन है। उसके अंदर ये जिज्ञासा है, एक प्यार का, एक सद्भाव का एक विषय। उस समय आप लोगों ने एक नया अध्याय लिखा है, ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। जब तक इतिहास रहेगा, लोगों के अंदर ये चेतना रहेगी, एक ऐसी महामारी से संघर्ष में आपने जो भूमिका निभाई है, उसको समाज कभी भूल नहीं पाएगा।